Today, when the world is combating the coronavirus pandemic, yoga remains a ray of hope, said Prime Minister Modi while addressing the International Yoga Day. Indeed, yoga is not just about exercise, it is a way to discover the sense of oneness with yourself, the world, and nature. The United Nations General Assembly on December 11, 2014 declared June 21st as the International Day of Yoga. The declaration came at the behest of Prime Minister Narendra Modi during his address to the UN General Assembly on September 27, 2014, where he stated, "Yoga is an invaluable gift of India's ancient tradition. It embodies unity of mind and body, thought and action, restraint and fulfillment, harmony between man and nature, a holistic approach to health and well-being." The idea behind 21 June being the International Yoga Day is that this date is the longest day of the year in the Northern Hemisphere and has special significance in many parts of the world. The theme of IDY 2021 is Yoga for Wellness. The idea behind this, as stated by Prime Minister Modi, is that yoga not only focuses on physical health but also mental health. Today, the importance of yoga is being realized from a larger perspective, wherein more students and practitioners of yoga are looking for a deeper understanding of how yoga can influence their life, attitudes, and well-being. In an exclusive interview, PBN spoke to international yoga guru Ravi Shankar Mani Pandey. Guru Ravi Shankar Mani represented India in Sunia on the occasion of first Yoga Day in 2015, and he has also lived in Nepal for 2 years as the Consulate General of India. Let's hear what he has to say about yoga, its practice in India and abroad. भारत का जो है वसुधैव कुटुंबकम एक हमारा आदर्श वाक्य रहा है। हम इसी भाव के साथ हर भारतीय कमोबेश जीता है। अब 2014 में जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की स्वीकृति मिली और उसके बाद संपूर्ण विश्व में योग तो था, 2015 से पहले भी योग का अभ्यास होता ही था, लेकिन योग का जो संस्थात्मक ढांचा जो है, विश्व के सभी देश ऑफिशियली योग को जो है प्रमोट किया। सभी लोगों ने एक सिंबॉलिक तौर पे योग दिवस के दिन योग किया। सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष या जो भी हाई डिग्निटरीज हैं, उनसे क्या होता है, लोगों को प्रेरणा मिली। एक जन समुदाय, एक जन सैलाब जो है ना योग को लेकर, वो 21 को तो एटलीस्ट हो ही जाता है। हर व्यक्ति, आप देखेंगे सोशल साइट पे हर व्यक्ति कुछ तो कुछ पोस्ट शेयर करके डाल रहा है, तो थोड़ा प्रभाव तो पड़ ही रहा है। और 2015 से लेकर आज 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज हम मना भी रहे हैं, और इसमें भारत पूरे संपूर्ण विश्व को योग में बांध दिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से। Prime Minister Modi, on the occasion of International Yoga Day 2021, also launched a M-Yoga app that will be available worldwide. Here's what PM Modi said on this. साथियों, जब भारत ने यूनाइटेड नेशंस में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखा था, तो उसके पीछे यही भावना थी कि योग विज्ञान पूरे विश्व के लिए सुलभ हो। आज इस दिशा में भारत ने यूनाइटेड नेशंस WHO के साथ मिलकर एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब विश्व को एम योगा ऐप की शक्ति मिलने जा रही है। इस ऐप में कॉमन योगा प्रोटोकॉल के आधार पर योग प्रशिक्षण के कई वीडियोस दुनिया की अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध होंगे। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी और प्राचीन विज्ञान के फ्यूजन का भी एक बेहतरीन उदाहरण है। मुझे पूरा विश्वास है एम योगा ऐप योग का विस्तार दुनिया भर में करने और वन वर्ल्ड वन हेल्थ के प्रयासों को सफल बनाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। M-Yoga app is an effort to further popularize yoga. It is being brought with a vision to help realize our collective vision of one world, one health. The app has been developed by the World Health Organization with the support from the Ministry of Ayush. Under the same aegis, Morarji Desai National Institute of Yoga, which has been designated as a WHO collaborating center for traditional medicine,
since April 2013, proposed and organized a brainstorming session to have views of various international and national yoga experts regarding a digital program for propagating the correct and appropriate use of yoga, which can be functional from a mobile platform, therefore called M-Yoga, who is developing a benchmark document for training in yoga as part of its global strategy to strengthen the quality, safety, and effectiveness of traditional and complementary medicine. And the M-Yoga app is a significant development towards realizing this goal as stated by Prime Minister himself. M-Yoga is a useful global public good to popularize yoga, developed for the general public and for yoga teachers to use in their daily life and teaching. Keep practicing yoga for wellness. That is all in this segment. Stay tuned for more updates.